Class 10 students, good morning to all of you. Hope you everyone fine. Students, today we discuss importance of secure password. Okay, it means today we have just discussed about passwords. All of you know that while you are just going to doing any type of net banking transactions, either you have to do some login access of your email account, either any other thing, you need to just a password to secure your id. Okay, so secure your portal over there. Okay, for that we have to create password. Today we have just discussed how we have to just create our password and how we have just keep that password in a secure mode. Okay, now in the statement this is given when we use the resources of internet, many processes take place in our computer or on the line device, but some of the action can be risky as it creates chance of the theft. Okay, the theft, it means the data may be stolen by something, someone, डेटा चोरी होने का, और मैनिपुलेशंस बाय हैकर्स, हो सकता है कि उसमें कुछ हैकर्स क्या करें, डेटा को मैनिपुलेट कर दे, डिस्टर्ब कर दे. As it is online, it expose us towards the fraud and makes us suffers unless we have taken the required steps to protect our password or credential. Okay, so that is a need. We have to required steps to protect our passwords or credentials, because if you not do that, then somebody just theft with you. Okay, when somebody theft with you, then you have to just defeated by the person. Those are named as a hacker. Okay, now we have just go to talk about that data security and privacy becomes utmost importance in the world. Okay, when users share confidential and sensitive personal information while accessing web application and online services, unauthorized access is a potential major problem for anyone who uses a computer or high tech devices. Okay, such as smartphones or tablet. Okay, the consequence can include the loss of the valuable data or information, including the bank account information, money, or even the complete identity. Moreover, unauthorized user may use someone else's computer to break the law and arise legal troubleness. It means what? Suppose that you are just keeping your mobile phones. Okay, you have to keeping your mobile phones, but your id and password are just know someone else. Okay, so when someone else are know your password, they will be just open your mobile phone and they just what you have to, they will just disturb your account information. They will be just send money here to and there, when if they know about your password or for upi payments and any other things. It's may be very it may be very deeply cost to you. On behalf of that, you have to just comes in a trouble. Okay, now we are just create a strong password to relief of them. A strong password is one of the more secure by virtue of being difficult for a machine or a human to guess to unlock. Actually हमें करना क्या चाहिए? We have to build a very strong password. That password not be break by the someone. Suppose that you don't be just give your date of birth, we don't give your name. You have to just use the some different things by which you have to just unlock your device. Through through advanced hacking and password breaking technique can be break into a most user account, but the complex password mean that any such attack is made difficult to time taking to execute. होता क्या है कि जब आपका पासवर्ड स्ट्रांग होता है ना, तो वो टाइम टेकिंग होता है, और कुछ लोग जब देखते हैं कि ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं फिर भी पासवर्ड हैक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसे छोड़ देते हैं. तो ऑन दैट कंडीशन, ऑन दैट सिचुएशन, योर computer should be safe, computer will be safe from others. Okay, now
The thing is that critical and sensitive domains like bank or other financial intermediates even use two-factor authentication technique to protect users with which use OTP, okay, one-time PIN along with the password or to log in द अकाउंट सपोज दैट आपका किसी भी बैंक में SBI बैंक में या एनी अदर बैंक में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है इंटरनेट का, ठीक है। तो व्हेन यू जस्ट गिवन योर आईडी, व्हेन यू गिवन योर पासवर्ड, व्हाट डज हैपन देयर, the happening is that when you just providing your ID and when you providing your password, it should be happen that they will be send a OTP on your mobile, one time pin, either one time password is said just given on your mobile phones, and through that OTP you will be login that account, okay, hope you understand. A strong password is hard to guess but it should be easy for the user to remember. यूजी देखो हार्ड किसके लिए होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए उनके लिए जो इसको गैस ना कर पाए, बट हमारे लिए क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए कि हमें रिमेंबर हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है, कभी कभी पासवर्ड बना के हम ही खुद पासवर्ड भूल जाते हैं, एंड व्हेन वी हैव टू जस्ट not understand the password, it will be just what we are unable to log in that, unable to log in there to access of the account, okay. So on there we have to just comes in a very critical problem and we will not have any other solutions for that, okay. Now here is the characteristic of a strong password. Characteristic of a strong password, what does happen, a combination of uppercase lowercase word of ample length along with the numbers and special character make a पासवर्ड कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपका नाम अजीत है तो यू शुड ए स्मॉल जे स्मॉल आई स्मॉल टी, ओके, यू हैव टू यूज द हैश साइन, ओके, एंड देन आफ्टर यू हैव टू जस्ट राइट सम कैरेक्टर्स, ओके, numbers, okay. So is just what it's just given a complex password and it is not easy to guess for any others, okay. It is not easy to guess for others. Now the second thing is say that a password strength can be achieved by incorporating the mentioned characters. Is the more characteristic you incorporate into password, the stronger it will be. A strong पासवर्ड इज़ हार्ड टू गेस बट इट शुड बी इजी टू लर्न यू रिमेंबर। मैंने अभी बताया कि पासवर्ड हमारा स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग द मेंशन कैरेक्टर्स, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आपके सेम ना हो, थोड़ा से डिस्टर्ब कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे ए के बाद बी सी डी डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी चेंजेस। और पासवर्ड जो है कि गेस करने में हार्ड हो, बट द फॉर गेसिंग हार्ड हो बट आपके लिए इजी फॉर यू रिमेंबर, मतलब आपके लिए रिमेंबर होने के लिए मतलब वो होना चाहिए कि आपको रिमेंबर हो पाए, ठीक है। Then keep the password at least 8 character. It is very mandatory, okay, when you are just creating any password, that length of the password need to be just reached to the 8 character. The more character to be better. अगर 8 से भी ज़्यादा होते हैं तो और अच्छा है, बट 8 कम से कम होने चाहिए आपके पासवर्ड क्रिएशन में। Then the password should be a mixture of both uppercase and lowercase letter। मतलब होना क्या चाहिए कि पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी हो और स्मॉल लेटर भी हो, तब जाके वो आपका एक सिक्योर पासवर्ड बनता है। नाउ इंक्लूड अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। देखो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, आप ये जो है कि एक्सक्लामेशन, एट द रेट, हैज़ और क्वेश्चन मार्क, कॉमा, यू हैव टू यूज एनी अदर थिंग्स, ओके, कॉमा नहीं बस क्वेश्चन मार्क तक, सॉरी। The password be your, you have to just you have secure your password very frequently and you have to change the password within 7 and 15 days, okay. Now tips for the keeping password secure. पासवर्ड शुड बी चेंज रेगुलरली, एटलीस्ट वंस ए मंथ, 15 दिन या 1 महीने दिन में आपको पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। इमीडिएटली चेंज द पासवर्ड, इफ व्हाट हैपन देयर इज एविडेंस sightless or the suspicious that the password has been become known by a human or machine। अगर आप किसी मशीन या किसी ह्यूमन के को वो पासवर्ड के बारे में पता चल गया है, ठीक है, जैसे मैंने किसी मशीन में लॉगिन कर दिया, आपने साइबर कैफे में गए, मशीन में लॉगिन करके और फिर चले आए थे आप, तो वहाँ पे तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ठीक है। नेवर यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर द डिफरेंट वेबसाइट। कभी भी किसी भी वेबसाइट पर, मतलब जैसे डिफरेंट वेबसाइट पर सेम पासवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना मान लीजिए कि आपने अपने इस बैंक को तो एक आईडी से लॉक किया, दूसरे वाले बैंक को भी उसी आईडी से लॉक कर देंगे, तो यूजर्स के लिए आसान हो जाएगा दोनों में हैकिंग करना, ठीक है। नाउ अवॉइड टाइपिंग फॉर यूजिंग पासवर्ड व्हाट
ऑन कंप्यूटर दैट नॉट ट्रस्टेड, फॉर एग्जाम्पल इन एन इंटरनेट कैफ़े। कभी भी इंटरनेट कैफ़े में अपना पासवर्ड कभी भी सिक्योर करके नहीं रखना चाहिए और वहाँ कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अधिकतर अगर मान लीजिए यूज़ करते भी हैं तो उसको वहाँ से डिलीट कर दिया करें, मतलब लॉग आउट कर दिया करें। नेवर सेव द पासवर्ड ऑन द वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आजकल करते क्या है, पॉपअप खुलता है और पासवर्ड सेव करने के लिए ऑप्शन देता है और हम उस पर क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो उससे सेव करने से क्या होता है, आपकी जानकारी साझा हो जाती है, किसको, उस वेब पोर्टल वाले को। अब वो चाहे तो आपका लॉगिन आईडी एक्सेस करके और आपके अकाउंट से जितना पैसा चाहिए उतना पैसा वो निकाल सकता है। बात समझा रहा है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कभी भी वेब पोर्टल पे पासवर्ड सेव नहीं करके रखना चाहिए, ठीक है। दैट यू डू नॉट कंट्रोल ऑन दैट यूज द मोर ऑफ 1%। देखिए होता है क्या है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके कंट्रोल में वो पासवर्ड नहीं रहेगा, वो अब उस वेबसाइट कंट्रोलर के पासवर्ड में रहेगा। वो चाहेगा तो वो आपका लॉगिन अकाउंट हैक कर सकता है। नाउ नेवर टेल द पासवर्ड टू एनीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। नेवर राइट द पासवर्ड, पासवर्ड कभी राइट भी नहीं करना चाहिए, दिमाग में याद रखना चाहिए, ठीक है। डोंट रीयूज द सेम पासवर्ड अक्रॉस द डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। हमेशा अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए, सेम पासवर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ द हैकर गेट्स द पासवर्ड यू हैव इमीडिएटली चेंज द पासवर्ड एंड लॉक योर अकाउंट्स। Now this is the exercise portions. So today the students, you have just completed the fill in the blanks, okay, and write about these short notes about it. Then you have also just write about differentiation, what will mean the website, web page, web browser, web server, what is Wi-Fi and WiMAX, okay. Then write, these are the question answer about it, okay. This question answer you have to write it. You may take a screenshot, those students not having the book but they are just write it. So this exercise is completed. Hope you students, all of you very well understand it. Thank you.